हुजैफा तिलावत के लिए सर हुजैफा को अनम्यूट करना है। मुज़ेफा शेख ना मैडम। ठीक है, किया मैडम, अनम्यूट किया। ठीक है हुजैफा, आप आवाज तो सुनाओ आपकी। यस मुज़ेफा, आर यू देयर? हुजैफा को अनम्यूट करना है। किया मैडम, मुज़ेफा शेख किया। नहीं, ये शायद ये कोई और है दिखता। किया मैडम। हुजैफा, आप आवाज तो सुनाओ। सी आवाज दावत करने की मिलती है। मुज़ेफा अकबर दोबारा सर की क्यों आ रही है? इसके अंदर रीसाउंडिंग हो रही है। अकबर सर उनको अनम्यूट कीजिए सर। अकबर सर, यू कैन अनम्यूट। हाँ सर, उनको अनम्यूट कीजिए इसको बिल्कुल। हुजैफा, यस, कैन यू हियर हुजैफा? सी रीसाउंडिंग क्यों हो रही है? सर हाँ अभी आ रही आवाज, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक है, आप तैयार हो ना फिर? जी ठीक है, करें स्टार्ट सर? यस यस। Okay. Assalamu alaikum. A very good afternoon to all gathered here for another digital program because of this pandemic. Of course, it's unfortunate we can't meet offline, but a good opportunity to learn new things and communicate. Principal will be joining us soon. So before we start with today's program on Rashtriya Ekta Divas, I invite Master Huzaifa for reciting a few verses from the Holy Quran. Over to you, Huzaifa. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakallah, Huzaifa. India, a land where people of diverse religion, tradition, culture, languages, and heritage live together in harmony in a single country, representing unity and diversity. You find people from different groups, different religions, cooperating, living together, helping each other, and making this a very strong society. In fact, this unity and diversity has become the strength of India. Sardar Vallabhbhai Patel, he tried his best to merge 565 princely states, and he made India a nation. His belief in the principle of unity in diversity and stand united for the common cause of India's independence made him the Iron Man of India. Due to his leadership qualities and the ability to connect to masses, he was given this title, Sardar Patel, meaning a leader, Patel. Thus, to maintain nation's unity and to acknowledge Sardar Vallabhbhai Patel's efforts in uniting the nation, in the year 2014, the government has declared his birth anniversary to be celebrated or observed as National Unity Day or
Rashtriya Ekta Divas each year. With this year's theme is based on the this basically is from the Home Ministry of India in an official statement. They have stated that National Unity Day will provide an opportunity to reaffirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand the actual and potential threats to the unity, integrity, and security of our country. As his words go, Sardar Vallabhbhai Patel, I quote, take to the path of dharma, the path of truth and justice. Don't misuse your valor. Remain united, march forward in all humility, but fully awake to the situation you face, demanding your rightness and firmness. Remember, every Indian has a right in his country, but it comes with certain duties. And it's very essential the present generation, the young generation, in whom hands these the present situation will go into, and they have to try their best to bring up, to get back to the original unity and diversity. To continue with the theme of the program, students will be presenting their views on the topics given to them. And the very first student who's be coming for presentation is Nagma Dhanse, who will be speaking in Urdu. The theme given to students is knowledge, traditions, practices, and heritage of India. Nagma, I invite you for your presentation. So उसको unmute करना होगा. Yes, yes. Kindly click on unmute button. Nagma, kindly click on unmute button. Kindly switch on your camera. Nagma, kindly click on unmute button. We have unmuted you from here. Nagma Dhanse, huh? She there. Yeah, she is there. I have unmuted her, but she should click on unmute button from her side. Yes, Nagma. Next, ma'am. Next. Next, Nazmeen. Sheikh Nazmeen. Yes, ma'am. Yes. Please go ahead. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Today, I would like to speak about my topic, tradition and unity of India. Everyone knows Indian culture and tradition are very unique across the world. India is a country of having many cultures, tradition, and religions that made people living in a peaceful, colorful, and diverse nation. It is unbelievable that different directions of India, that is, north, south, east, and west, have their own culture and traditions. In India, there are 22 languages and several religions have Christianity, like Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, etc. Whereas Hindi is the official language of India. However, India is the oldest civilization where people still follow their old culture of caring and humanity. Even people become modern in today's world. Still, they celebrate festivals as per the customs. India has several religions that originated 5,000 years ago. Hinduism originated from Vedas, so all Hindu scriptures have been scripted in the Sanskrit language. Similarly, another religions, like Buddhism, originated through the teaching of Gautam Buddha in the country. There are various eras that come and gone.
but haven't changed the influence of real culture. That's why younger generation still follow the older generation's culture. The traditional aspect of India to the greet anybody is by saying namaste and touching the elder's feet, whereas in Islam to greet anybody is by saying salam. Rather than it, if we talk about art, art is also one of the special culture of India. Each state of India has its own art form like dancing and singing, such as Kathakali, Bharatnatyam, Odisha, and so forth. Rather than it, if we talk about Indian festivals, even festivals plays an important role in Indian culture and traditions. People from different religions celebrate different festivals like Diwali, Dashera, Janmashtami, and Navratri, and so on are celebrated by Hindu people, whereas Eid ul Fitr and Eid ul Adha festivals are celebrated Islamic people. Other than this, you know may you know many harvest festivals like Makar Sankranti, Pongal, Sohri, etc. are celebrated by very important component of our nation, farmers. There are exist different religion festival in each state of India, like Saraswati Puja, Lohri, and so forth. Everyone, if we talk about Indian cuisine is the most inspirational, right? Different states have different cuisines. Like North Indian food includes vegetables, roti, dal, paratha, etc. Also, South India food includes dosa, sambar, idli. At the last but not the least, I would like to end my speech with the inspirational quote of Sardar Vallabhbhai Patel. यहाँ तक कि यदि हम हजारों की दौलत भी गवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए. यकीनन भारत फिर महान होगा, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम होगा. थैंक यू. Ameen. Jazakallah, Nazmeen. The next speaker we have here is Kunal Prakash. If you're there, please unmute yourself, Kunal. Or it could be Neha Chauhan, whoever is ready. नमस्कार. Yes, मेरा नाम Kunal Chauhan. Neha Chauhan. Yeah, sorry, Kunal Prakash. He was here, sir. Abhi tha. Okay, Kunal, please continue. कुणाल प्रकाश रणखंबे. Yeah, yes. Ajra. Switch on your video and start. आज राष्ट्रीय एकता दिन 31 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस वल्लभभाई पटेल यांच्या जन्म निमित्ताने साजरा केला जातो. 2014 मध्ये भारत सरकारने याची सुरुवात केली होती. भारत देशामध्ये असंख्य जाती, धर्म, समुदाय, प्रांत आहेत, पण हे सर्व सोडून आपण सर्वप्रथम एक भारतीय आहोत हे समजण्यासाठी या दिवसाची सुरुवात भारत सरकारने केली असेल. तसेच आपल्या आरोग्यासाठी खरोखर चांगल्या असणाऱ्या आपल्या भारतीय परंपरा, रूढी यांचा इतिहास आपण पाहिलाच असेल. हा परंपरा रीती रिवाजाने भरलेला आहे. तसेच भारत देशामध्ये विविध जाती, परंपरा या सर्व असूनही भारत एक आहे याची ग्वाही देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. भारताच्या गृह मंत्रालयाने एकता दिनाचे अधिकृत विधान म्हणून केले आहे की राष्ट्रीय एकता दिन दिवस एकता, अखंडता आणि सुरक्षिततेसाठी वास्तविक संभाव्य धोका सामान्य करण्यासाठी आपल्या राष्ट्राचा अंतः सामर्थ्य लवचिकतेची पुष्टी करण्यासाठी संधी प्रदान करते. दरवर्षी गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या इथे पुतळ्याच्या खाली इंटिग्रेशन ऑफ इंडिया हा विषय घेऊन थीमचे आयोजन केले जाते.
यावर्षी 144व्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रम त्या ठिकाणी साजरे केले जातील. भारताचे पहिले उपपंतप्रधान होते. भारताचे सरदार वल्लभभाई पटेल हे पहिले उपपंतप्रधान होते आणि त्यांना भारतीय लोह पुरुष असं म्हटले जाते. या दिवसाचं प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे राष्ट्रीय एकताचा संदेश पोहोचवणे आणि देशातील असंख्य समाजातील प्रत्येक भागापर्यंत या दिवसाचं महत्व पोहोचवणे हा आहे. थँक्यू मॅम. Thank you, Kunal. The next speaker is Neha Chauhan. Yes, Neha, please speak. Neha. You are- First of all, very good afternoon to everyone. I would like to my speech start with permission of teachers. Can I? Yes, please start. Please start. वैसे तो देखा जाए हमारे भारत में बहुत सी अलग अलग धर्म रहते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत एक है संगठित इकाई है. क्षेत्रफल के आकार में देखा जाए तो उसे एक द्वीप तो कहा ही जा सकता है. पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जाति, धर्म, समुदाय रहती है, फिर भी उनमें एक एकता दिखाई देती है. बहुत से विदेशी ऐसे हैं जो समझने में असमर्थ है कि हमारे भारत में अभिन्नता है, फिर भी इन अभिन्नता में एकता कैसे है. तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, हमारे विभिन्नता में एकता को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. पूरे विश्व में हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो वसुंधरा कुटुंब का प्रण लेके चलता है, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है. एक दूसरे का ख्याल रखना, उनकी समस्याओं को समझना और उनको दूर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है. ये रूल जो है, ये नियम का पालन सिर्फ एक भारत ही है जो मानता है और करता है. ये कहता नहीं, करता है. हमारे भारत में अलग अलग संस्कृति है. यही संस्कृति है जो हमें एकता के सूत्र में बांधे रखती है. हमारे भारत में कुल 150 भाषाएं और 15 राज्य भाषाएं हैं, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है. इन सब के बावजूद हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. लोहड़ी, रमजान, दिवाली, इन सब में मनाए जाते हैं, लेकिन हम सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, भाईचारा दिखाते हैं और इन्हें यही जो है वो हमें एक सूत्र में बांधे रखता है. ये जो हम लोग समझते हैं कि अलग अलग लोग रहेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, लेकिन नहीं. हमारी ये जो अभिन्नता है वो एकता के सूत्र में है और वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है. वो हमें सांस्कृतिक सूत्र में बांध के रखती है, जो कि हमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिखाती है, लेकिन वो अलग अलग उन पुष्पों के समान है जो एक साथ मिलकर वो माला बनती है, जो कहीं भी सुशोभित होकर एक अलग सी रोशनी फैलाती है. और ये सुशोभित माला हमारे भारत की माता के पास है. हमारे पास अलग अलग लोग हैं, हम पंजाबी है, कन्नड़ है, मलयालम है, अलग अलग भाषाएं, लेकिन उन सभी भाषाओं में एक मिठास है. जिस प्रकार भारत के भाषाओं में मिठास है, उसी प्रकार हमारे यहाँ के भोजन में भी मिठास है. अब भले से भोजन के नाम अलग अलग हैं, फिर भी सोचने वाली बात यह होती है कि उन भोजन के मिठासों में एक मिठास होती है, वो है प्रेम की. यहाँ पे हम सभी एक दूसरे को अपना मानते हैं, एक दूसरे का कभी बुरा नहीं चाहते हैं. और ये देखा जाए तो सिर्फ हमारे भारत में ही होता है. हमारे यहाँ पे जो भी है, हमारे वर्ग अलग है, हमारी जातियां अलग है, इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हम एक हैं, हमारी एकता एक है. और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में हमारा भारत ही एक है, जहां दिवाली अली के बिना और रमजान राम के बिना पूरी नहीं होती है. थैंक यू. Thank you, Neha. The next is Muskan Kumari, who will be presenting her thoughts in English. Muskan, Yes, ma'am. please go ahead. Before starting, I would like to say a poem. आओ जिंदगी को उन्नति दे, शांति दे. आओ जिंदगी को एक नई हम जिंदगी दे. आओ सजाएं देश विशाल, आओ चले हम लेके मशाल. आओ हर नगर को, हर गली को रोशनी दे. आओ प्यार बांटे, हर किसी को दोस्ती दे. आओ मिटा दें जुल्म की रात, आओ मिटा दें जुल्म की रात. आओ सुना दें प्यार की बात.
आओ जो दुखी है उन दिलों में हम खुशी दें, आओ फूल बनकर इस चमन को ताजगी दें. Good evening, everyone. I am Muskan Kumari, NSS volunteer of Pune College of Arts, Science and Commerce. Thanks to our respected principal sir, program officer, Dr. Afreen Ahmed ma'am and Mr. Akbar Sayed sir for giving me the opportunity to present my thoughts on the occasion of National Unity Day. The world is remembering today Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India and the father of United India. On his birth anniversary, also celebrated as the National Unity Day or Rashtriya Ekta Divas. Sardar Vallabhbhai Patel played most crucial role in uniting India after independence. He always spread a message of unity everywhere. Before independence, our country was divided into 565 princely states. After independence, by British rule, these princely states were given the option of merging with India, Pakistan, or remaining independent. Sardar Patel merged these princely states into India with his foresight, diplomacy, and military force. India is a land of various culture and tradition. It is vast and vibrant. We have valued our culture and tradition ever since the beginning and have preserved it beautifully for our future generation. Our culture heritage is of utmost importance to us. No matter how much we have progressed, to how far we plan to reach, we can never forget our culture and traditions as they are embedded in us and are inseparable part of us. People from numerous castes and religions that million of people follow, and there are popular and historical heritage places from each of these religions. Each of these places uh, each of this caste and religions has its own custom and traditions that made people living in a peaceful, colorful, rich, and diverse nation. The culture followed by every religion group the culture followed by every religion's group has deep underlying roots and is followed with unwavering faith. There are several religions in India, and each religion has its own set of festival, dance forms, music, and various other art forms, and each of these has its own charm. The beauty of our culture is that we not only have respect for our heritage, but also show respect for the other religions too. This is the reason why we are united and why the vivid India celebrates festivals in India. The whole country unites during this time. This unity among all the people in this country shows our strength and our richness in culture. We also remain together as a team. There are many different eras that have come and gone, but no era was very powerful to change the influence of the real culture, so the culture of younger generation is still connected to the older generation. Also, our ethnic culture always teach us to respect elder, behave well, care for helpless people, and help needy and poor people. Additionally, there is a great culture in our country that we should always welcome guests like gods. The way that is why we have the famous saying like Aditi Deva Bhava. So the basic roots in our culture are spiritual practices and humanity. Thank you. Thank you, Muskan. Thank you. Next, we have Adnan Tamboli. Unmute yourself and begin. Yes, Adnan. A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. Good afternoon, respected principal, faculty, teachers, and my dear friends. Let me share something about a tradition of India. In India,
There are different cultures and traditions which are adopted by Indians. It plays an important role in India. Culture is a condition of being educated or cultured. This is an idea and philosophy of a particular society at a specific time. In fact, culture is made up of ethics and moral values that govern a society. While culture is the result of many factors like social, religious beliefs, rituals, tradition, but it is important that we cultivate our culture with rich and positive ideas. India is always considered to be a culturally rich country in the world due to its unity in diversity. There are many states in India with diverse food habits, traditions, beliefs, social customs, rituals, languages, and festivals. The distinctive features of our country is secularism, and the best part is that every citizen of India lives in harmony and peace by one another's beliefs and culture. We celebrate every occasion with prayer, feast, fairs, singing, dancing, and wearing colorful clothes with some enthusiasm. While India is known for its cultural prosperity, on the one hand, it has created great fame and identity in the whole world of science, and now the scientific nature has become an integral aspect of Indian culture and society. No other country in the world presents such a fascinating medley of a rich and changing heritage that is old as a civilization. Respecting and revealing elders is the cornerstone of Indian culture. Our guest is our God. This is a very common cultural trend of our country. India is a large nation with a federal structure. There are 29 states and uh, uh, seven which present a true description of different cultures, languages, habits, and religions which stand the Indian cultural all over the world. There are different aspects of the Indian culture. Therefore, the Indian culture is a very unique culture and has various practices. Although the youth do not believe in the traditional aspects, the culture will vary with time and will not be traditional anymore because of the modern world. All in all, the aspects are frequently practiced, but tomorrow's generation are going to change it. Thank you. Thank you, Adnan. Uh, Nagma, I now invite you to present your thoughts. Nagma Dhansing. Hello, very good evening to one and all. Hello. Yes, we can hear. Go ahead. Yes, ma'am. So today we are celebrating the National Unity Day. So as everyone mentioned that 31st October is celebrated as National Unity Day. So I will switch now to Urdu because, hello. Yes, you can go ahead. बात करो. Hello. Yes, we can hear you, Nagma. Yes, ma'am. So, जो National Unity Day है, as everyone mentioned and you mentioned that 2014 से इसको एक्ट में लाया गया and वो आज इसलिए में भी क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि कहा जाता है कि divided we fall and united we stand. हमारा जो देश है, हम सारे इंडियंस, हमारा देश, हम एक हमारी एक जो ट्रेडिशन है, हमारी जो प्रथा है, हम एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड रहते हैं. लेकिन आजकल के जो हालात हमको देखने को मिल रहे हैं कि आजकल यूनिटी बाकी नहीं रही. बट पहले जो हमारे बहुत बरसों पहले आज़ादी के पहले इनफैक्ट जो हमें आज़ादी मिली वो इसीलिए मिली कि हमारे देश में काफ़ी धर्म के लोग हैं, काफ़ी मजहब के लोग हैं, फिर भी हम लोग यूनाइटेड थे. लेकिन आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो जो यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं खो गई है. सो शायद
इस डे के थ्रू लोगों में वो अवेयरनेस पैदा हो, वो जज्बा पैदा हो कि कहीं ना कहीं आज हम फिर से यूनाइट हो, क्योंकि अगर हम यूनाइट होंगे तब भी हमारा देश, हमारे देश के ट्रेडिशंस और हमारे हेरिटेज को आगे पूरे दुनिया में जाना जाएगा। जैसा कि हमारे देश को पूरे दुनिया में हमारे ट्रेडिशंस से, हमारे प्रैक्टिसेस से और हमारे हेरिटेज के थ्रू जाना जाता है। सो मेरा व्यू यही रहेगा कि हमारा जो देश है जिसमें हमारे सारे ट्रेडिशंस जो आज तक हमारी जो प्रथा, हमारी रस्में जो चलती आ रही हैं, उनको अगर आगे बढ़ाना है तो हमको एक होकर रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम आज वही नेशनल यूनिटी डे मना रहे हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है। तो अगर आज हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें हमारी यूनिटी को बनाए रखना पड़ेगा। सो मैं लास्ट में एक शेर कोट करना चाहूंगी कि शेराजा अपना बिखर जाने को है, एक हो जाओ कि हम मिटने को है। थैंक यू। Jazakallah, Nagma. I invite Shubham Pawar next. A very good afternoon to one and all. I, Shubham Pawar of Pune College. Today, we all have gathered here to celebrate the National Unity Day. National Unity Day is celebrated on 31st October. It was introduced by the Government of India in 2014. The day is celebrated to mark the birth anniversary of a great leader who played an important role for the independence of our country, Sardar Vallabhbhai Patel, most commonly known as Iron Man of India. This year marks the 144th anniversary of the freedom fighter and ace politician. Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day is celebrated on Sardar Patel's birthday because he played a major role in the integration of India, Ek Bharat, from over 560 princely states as one secular India. To acknowledge his efforts in uniting the nation, India celebrates National Unity Day on his birth anniversary. In countries like India, which are full of diversity, religion, caste, language, civilization, culture, it is very important to maintain unity. So the Government of India proposed Rashtriya Ekta Divas in 2014 in memory of Sardar Vallabh. Am I audible, ma'am? Yes, continue, beta. In memory of Sardar Patel, the Government of India has constructed a huge statue of the Iron Man of India near Narmada. The official statement from the Home Ministry, it was stated that national unity provides an opportunity to reaffirm the inherent strength and resilience of our nation and the actual and potential integrity and security of our country. On this day, people recall the great work of Sardar Vallabhbhai Patel, acknowledge them by celebrating Rashtriya Ekta Divas. People gather and celebrate the day by delivering speeches, spreading knowledge about Sardar Vallabhbhai Patel and his work. On this behalf, I end my speech. I hope that we all should maintain unity and integrity for a secular India in the future. Thank you. Thank you, Shubham. Next, we have Sheikh Bilal. Unmute and begin, Bilal. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Assalamu alaikum. Very good afternoon. My name is Sheikh Bilal Khalid. भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत केंद्रीय सरकार द्वारा 2014 में दिल्ली में की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश को हमेशा एकजुट करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई। इन्हीं कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि प्राप्त करने के लिए इस दिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल मैम? हेलो? Yes, you continue. यस। किसी भी देश का आधार उसकी यूनिटी में ही होता है।
भारत देश कई साल तक गुलाम था, इसका सबसे बड़ा कारण था अवाम के बीच यूनिटी की कमी होना। साथ ही यूनाइटेड इंडिया पर कई लोगों ने राज किया। इस वजह से भारत देश में बहुत सी जातियों का विकास हुआ। गवर्नेंस बदलते रहे, इस वजह से अवाम की सोच बदलती गई और इनमें मतभेद पैदा होता गया और देश में सबसे ज्यादा ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया। उन्होंने इस कमी का फायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस एक हथियार के कारण अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल हुकूमत की। इससे जाहिर होता है कि देश की विकास शांति और यूनिटी के कारण ही संभव है। कौमी लड़ाई देश की नींव को खोखला करती है। इससे ना निजी लाभ होता है, ना ही राष्ट्रीय हित। आज भी हम कहीं ना कहीं एकता में कमी के कारण ही अन्य देश से पीछे होते जा रहे हैं। थैंक यू मैम। Okay, thank you. Next we have Bashir Kadri. Bashir, unmute yourself and begin. Or we have Huzaifa Sheikh if Bashir is unavailable. Huzaifa Sheikh. Madam, spell the Huzaifa. H-U or U starts with. H-U. I think these are the last two speakers. Huzaifa is not there. Yeah, Bashir, he is here, but he's not unmuting himself. Yes, Bashir Kadri, kindly click on unmute button. Bashir Kadri, kindly click on unmute button. We have unmuted you from here. Ma'am, all those students and participants are advised to kindly fill in the attendance sheet. It also includes the feedback form. It is been shared in the chat box. Again, it will be shared. Ma'am, Principal Sir has joined us. Yes, yeah. Assalamu alaikum, sir. Welcome to the Ekta Divas celebrations. Madam. Yes, sir. 8 participants spoke on the topic very beautifully, sir. Yeah, yeah. I request you to guide these young minds. बहुत बहुत शुक्रिया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती हम लोग सब लोग मना रहे हैं। हमारे जितने स्टूडेंट्स और मैंने सब लोगों को सुना, बड़ा अच्छा लगा कि एक यूनिटी डे मनाने के लिए हम लोग सब लोग साथ में आए। आप सभी बच्चों को ये यूनिटी डे की बधाई और साथ में अफरीन मैडम और जो टीम ने आज सब लोगों को इकट्ठा किया और यूनिटी डे के बारे में बताया। और हम सभी लोग अगर साथ में अच्छी तरह रहेंगे, ये जो इंडिया है, ये जो भारत है, ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान एक कल्चरल डाइवर्सिटी वाला हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा और अफरीन मैडम की जो टीम आज जो काम कर रही है, ये टीम, इसमें मैं वकील सर को देख रहा हूँ, हमारा अकबर सर है, बाकी जो ग्रुप है और हमारे जितने भी स्टूडेंट ने आज पार्टिसिपेट किया और जो स्टूडेंट आज हमको सबको सुन रहा है, सभी स्टूडेंट को हार्दिक 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 बधाई, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक सभी का आभार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट इतने बेहतरीन बोलते, मैंने देखा, नगमा को भी सुना, बाकी बच्चों को भी सुना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा स्टूडेंट ये यूनिटी के लिए, ये सबको एक करने के लिए काम में आने वाला स्टूडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. It was a very short time given to students for preparation, yet there was a very good response. Thank you, children.
The word humanity itself Thank you, has ma'am. unity within it. So if humanity stands first, automatically unity will prevail, of course. Yeah, with these few thoughts, I now request Vakil Syed sir to propose the vote of thanks, please. Yes, thank you, ma'am. Thank you to give me an Vakil sir, Yes, sir. sorry to disturb. We need to take this unity pledge at the end of Unity this pledge. program. सर हमारे पास है, स्क्रीन शेयर करेंगे फिर. और उसका एक कॉमन. मैडम सबको बोलने के लिए बोलो फिर. यस मैडम पहले वो कर लेते हैं आप वोट ऑफ थैंक्स. ठीक है. प्लीज शेयर योर स्क्रीन मैम. इट्स इन हिंदी. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. बोल दिए मैडम. वकील सर करो शुरू. I'm sorry. ये जैसे था वही ठीक था. Let everybody, madam. Repeat. Yeah. हाँ सर. हेलो. सभी लोग मेरे साथ में रिपीट करेंगे. मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ. मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ. मैं राष्ट्र की एकता. मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता, रक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का प्रयत्न करूंगा और सख्त प्रयत्न करूंगा. मैं शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ. जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टा संभव बनाया जा सका. कार्यों के द्वारा संभव बनाया जा सका. मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य से संकल्प करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. वेलकम. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Students are requested to kindly mute. Thank you, sir. Thank you. Yeah, should we go for a vote of thanks? Yes, all the participants are requested to kindly fill in the attendance sheet. Attendance sheet is compulsorily to be submitted by all the participants. Yes, madam. Should we go for vote of thanks? Yes. Okay, so thank you. Give me an opportunity to propose a vote of thanks. I, Mr. Syed Wakil, Assistant Professor, Department of Commerce, PG and Research Center, and NSS Committee member, on behalf of Anjuman Khairul Islam, Pune College of Arts, Science and Commerce, NSS unit, I thank the management, Anjuman Khairul Islam Trust, Mumbai. I thank our Honorable Principal, Professor Dr. Aftab Anwar Sheikh sir. I thank our NSS Program Officer, Dr. Afrin Sheikh, Dr. Akbar Sayyed sir, all NSS committee members. I thank all the teaching, non-teaching staff. I thank all the participants. I thank Imran Mirza sir for providing the technical support and arranging such a wonderful Zoom meeting. And I thank all the students also, all the speakers, today's speakers also, for wonderfully covering the purpose of this Unity Day. I'm sure this day, after taking the pledge, more focus will be on the unity of this country. Thank you very much, one and all. Over to you, Afrin ma'am. Thank you, sir.
there's an announcement. With this, we are also going in for observing the Vigilance Awareness Week till the 2nd of November. So it's a request on the website. You'll be given a small scroll पे जाके आप Vigilance Awareness Week पे click करेंगे. You'll get the pledge there through the government website. So go through that, take the pledge. You'll get your automated certificate. And meanwhile, I also request all those who are good at making digital posters, please make posters and send them to us. The best we will display on different websites, college website, as well as YouTube channels. We have to do 3 or 4 activities so that we spread awareness on anti-corruption. The main theme is anti-corruption. So keeping this in mind, please make posters and send them to either Akbar sir, me, or the NSS group. And most probably Monday, we'll also have a program. We'll get a speaker and then invite them accordingly. जी सर, वो प्लेज को जो प्लेज है ना, वो प्लेज को सब लोग सर्टिफिकेट ले ले बोलना, अपना सर्टिफिकेट. दे कैन अपलोड दैट एंड दे कैन हैव द सर्टिफिकेट. दोनों का सर्टिफिकेट, आज का भी जो आपने किया ना, उसका प्लेज का भी सर्टिफिकेट और दूसरा विजिलेंस डे का भी सर्टिफिकेट एवरी स्टूडेंट शुड हैव. Okay. Vigilance ka, your name and everything will be automatically done in that. It's a government website. So that's an authentic one. Please don't hesitate. Go ahead with that. It will be displayed on the website by evening, inshallah. Okay, ma'am. And from now on, please give in your attendance in the Google Forms given in the chat. Ma'am, just 1 minute. We should have the photo session. I request all the participants to kindly switch on your camera so that we'll have a photo session for this program for our official record. Just 1 minute and that will be the end of the program. Kindly submit your attendance. Okay. All the speakers, please show us. Just 1 minute. All the participants are requested to kindly switch on your camera for the photo session. Yes, we are waiting for you. Just 1 minute. Okay, thank you very much. Over to you, ma'am. Afrin, ma'am. Thank you, sir. So I'll be waiting for digital posters on the group. Yes, make good ones with the theme anti-corruption. Yes, thank you. Thank you for attending 44. It had reached almost 55, I suppose, sir. Thank you. Okay, thank you very much. More than 100 people, including Zoom and YouTube, have attended the program. And the link will be shared with the students. You can watch it later on also. Thank you, one and all, for joining us. Thank you very much. Ma'am, I'm ending the meeting for all.